In this video, we are talking about DBMS. Let's start the video and go to the topic of DBMS. What is forward to my notebook? Here I written everything about DBMS in short form. A database management system is a software system that enable users and applications to create, manage, retrieve, update, and delete data in a structured and efficient manner within a database. Just like in your college or anywhere else. So we can say library is a database management system. Instead of you having to manually search through thousands of books, you have a librarian. In case of in software, the librarian is the DBMS, who knows exactly where everything is, who is allowed to access it, and how to keep it safe and in order. So in library, you should ask the librarian, and you actually don't want to search manually by one. So you go to the librarian and ask that particular book, where is that particular book. After that, he will consist you where to go, or either he can do by himself. Core component of DBMS. So here are 5 to 6 core component of DBMS. One is software, and second is data, third is hardware, procedure, database access language like DL, and users. User is the software. This is the DBMS application itself, like MySQL, Oracle. These are the software. In this software, you can literally write or create queries to fetch data, to delete, to modify, to create data in table form, and to structure data in query form, in table form. Then second is data. The data itself is a collection of information that is organized and stored. This is the what you are managing. You know what is data? Data can be set of data is a set of collection. This can be images, video, lot of videos, and lot of transactions, finance transactions, payment transaction, and salary slip, etc. Anything, everything in this world is a data form. It can be any form, can be a data. And third is hardware, the physical server and disk drive. जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, या फिर मेमोरी कार्ड एंड रैम, कैश मेमोरी, इन सब में डेटा स्टोर होता है, और सब में जो डेटा स्टोर होता है वही हमारा डेटा काम में भी आता है DBMS में. जैसे हम जो DBMS में यूज़ लेते हैं वही डेटा होता है सब जगह. जैसे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या फिर मेरे जैसे ही मैं पहले कंफ्यूज होता था कि डेटा होता क्या है, कहाँ से आता है. बाद में पता चला जो हम वीडियोज़ बनाते हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक तरह का एक डेटा है. इसे भी मैं YouTube पे अपलोड करूँगा, फिर YouTube के सर्वर में जाएगा, ये वहाँ जाके ये सेव होगा, वहाँ मल्टीपल पैकेट्स में जाके ये सेव होगा. जैसे अगर एक ही बार में अगर ये सेव हुआ तो ये मुश्किल हो जाएगा उसके ढूंढने के लिए, या फिर कहीं भी सेव करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो फॉर्मेट बहुत ज़्यादा डेटा का स्पेस लेता है. तो इसीलिए इसे छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स में स्टोर किया जाएगा, जिससे कि डेटा को अच्छे से मैनेज किया जा सके. नंबर 4 पर आता है प्रोसीजर, द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज़ द DBMS. बैकअप प्रोसीजर, लॉगिन रूल्स. इन द प्रोसीजर लाइक बैकअप के जो प्रोसीजर होते हैं उनमें डेटा हमें कैसे वापस लेके आना अगर कभी भी डिलीट हो जाए. तो जैसे बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं, उनमें जो डेटा होता है वो सिर्फ एक जगह पर नहीं होता. डेटा सेंटर अपना डेटा मल्टीपल स्टोर्स पर रखते हैं, जिससे कि अगर कभी भी एक डेटा सेंटर में कोई खराबी आए तो डेटा सेफ रहे. डेटा एक्सेस लैंग्वेज, द लैंग्वेज यूज टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस. The most common is SQL. You heard about SQL many times in your life, which is used to select, insert, update, and delete data. In the select, you can select a table, you can select a particular column, you can select a particular row, you can select a entity, and insert. After select your table or anything you want to select, just like row or column, entity, anything, you can insert. Insert means आप कोई भी एक या फिर एक से ज़्यादा अगर आप डेटा उसमें ऐड करना चाहते हैं टेबल में, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो आप इंसर्ट का यूज़ करते हैं. उसके बाद आता है अपडेट. अपडेट में अगर आप
डेटा में मॉडिफाई करना चाहते हैं कुछ भी, जैसे किसी व्यक्ति ने या किसी एक पर्सन ने या एंटिटी, जस्ट लाइक एंटिटी इन द DBMS वी कैन से एंटिटी, यू वांट टू चेंज एंटिटी। मान लो आपका कोई दोस्त है, उसने नंबर लिया है नया, तो हमें पुराना वाला नंबर डिलीट करके नया वाला ऐड करना है, तो वहाँ पर हम अपडेट यूज़ करते हैं। एंड डिलीट में हम क्या करते हैं, जैसे एक डिलीट इस किसी भी डेटा को इरेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए डिलीट करते हैं, ये तो आपको सबको पता ही, इट इज़ नॉर्मल टू एवरीवन टू अंडरस्टैंड what is the purpose of delete. The last point is users, the people or application who access the data. This can range from a database administrator who manage the entire system to an end user running a report. I already talked about database administrator DBA, who can grant access to admin, who can grant access to other users, and that's the work of DBA. Key functions and advantages. A DBMS is used instead of simple file system like text file or spreadsheet because it provides powerful features like reduce data redundancy by centralizing data. It provides having the same piece of information. Reduce data redundancy by centralizing data. It avoid having the same piece of information stored in multiple different files. जैसे एक स्टूडेंट है राहुल, उसके जैसे एक कॉलेज है, उसमें अलग अलग फाइल्स या टेबल बनी हुई है DBMS में, जिसमें एक फीस की अलग होगी, असाइनमेंट की अलग होगी, हिसाब से मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, कोर्सेज की भी हो सकती है, कोर्सेज की अलग होगी, तो उस हिसाब से मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं। तो इस तरह से नहीं, अलग तरह से अगर हम ऑर्गेनाइज करें तो भाई स्टूडेंट यू कैन ऑर्गेनाइज द डेटा, यू कैन पुट एवरीथिंग इन स्टूडेंट टेबल, in the I can say you add a column by name of the student, or you can add a column by student, and below them you can add student name one by one and add information parallelly of every student, and you can manage whole data in one sheet. Here we are talking about types of DBMS with suitable example. Are not one size fits all. The two main categories are relational and non-relational. So number one, relational DBMS. Relational, this is the most common type. It organizes data into table that are related to each other using unique keys. It uses SQL for queries and is excellent for structured data where consistency and accuracy are critical. So here are most popular software of IDBMS: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database, SQLite, and there are too many other software in the market. So these are top 5, or we can say popular 5 software. And real world example of relational data type: a banking system. A bank uses an RDBMS to manage customer accounts. One table, customer, stored customer information, in which you can add customer ID, name, address, contact detail, and in another table you can, in another table, account, store account detail like account ID, customer ID, balance, and due balance, etc. When you transfer money, the DBMS use a transaction to ensure the money is both debited from the account and credited to other account. If any part fails, the entire transaction is rolled back, ensuring the database remains consistent and no money is lost. Non-relational DBMS. Non-relational DBMS are designed for high scalability and flexibility. They are used for large volume of rapidly changing unstructured data like social media posts, log files, or information technology sensor data, IoT sensor data. Popular software examples like MongoDB, Redis, Amazon DynamoDB, Apache Cassandra, Neo4j. These are most popular softwares of non-relational DBMS. Real world example of non-relational DBMS is social media feed. A social media app uses no SQL database to manage user posts.
Each user's profile and their post can be stored as a single document. When a user posts an update, the app just adds a new item to their document or a new entry in a wide column table. This design is extremely fast for writing new data and for loading a user's feed. It can easily scale to handle millions of users posting at the same time, which would be very difficult for a traditional RDBMS. In meantime, you actually see the AI rapidly changing the AI rapidly taking information from others, just like you use the grok, you use grok of X, which is belong to Elon Musk. So you can use grok work on real-time data of X, formerly known as Twitter. So grok is very fast in reading the real world data. That's all for today. Tomorrow will be talk of tomorrow will be talk about a particular topic of DBMS. Thanks for watching.